out of this, some form can be asked individually, and it has been asked. जैसे कि polyandry has been asked individually. Then rules of marriage, that has been asked. Last years, I think preferential rule of marriage was asked. So entire form can be asked. तो कभी कभी इसमें से कुछ पर्टिकुलर मैरिज भी पूछ लेता है, ठीक है, और ज्यादातर टाइम पूरा पूछता है। तो अगर 20 मार्क्स में आता है तो लिखना बहुत मुश्किल है। यूजुअली लोग क्या करता है, सिर्फ क्या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरिज है वो लिख के छोड़ देता है। ये अप्रोच सही नहीं है। आपको फॉर्म्स क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल भी देना चाहिए, कारण भी बताना चाहिए, और एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन दैट 300 वर्ड्स। ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। तो लोग तरीके नहीं ढूंढता है, ढूंढता क्या है, जो आसानी से करके आ जा, तो मार्क्स भी आसानी से दे देता है। 20 में 6-7 दे देता। अगर आप फॉर्चूने की दुकान की पर्ची लिख के ले जाओगे तो नहीं, तो क्या मार्क्स देगा? तो हर क्वेश्चन का एक डिमांड होता है, तो उस डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करोगे तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स लिखने से मार्क्स नहीं आएगा। दिस आर इजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है, जस्ट लोग शॉर्टकट में करना चाहते हैं मार्क्स में। तो शॉर्टकट करो, लेकिन मेक इट कंप्लीट। शायद यूपीएससी का यही आज की डेट में अप्रोच है, राइट एवरीथिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो लोग एवरीथिंग नहीं लिखता, कुछ ही चीज लिख के आ जाता, नहीं एक्सप्लेन भी करता। तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल बोलूंगा, तो उसको शॉर्टकट भी कर सकते, करके दिखा भी सकते, जो मैंने शॉर्ट किया, देखो, समझा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, such as forms of marriage based on number of spouse, forms of marriage based on rules of marriage, then marriage based on rarity. Those are rare types of marriage. So first, forms of marriage based on number of spouse, कितने हस्बैंड कितने वाइफ है। तो पहला जो है मोनोगेमी। तुम बताओ व्हाट इज मोनोगेमी? अच्छा, क्लास नहीं आती है क्या? क्यों नहीं आती है? अच्छा, तो सर्दी की चलती। तो तुम तो दिल्ली के हो, तुम्हें किस बात की सर्दी है? अच्छा, अभी ठीक है। तो बताओ सबसे आसान क्वेश्चन, मोनोगेमी क्या है? अच्छा, इससे कुछ समझ में आया? मैरिज विद सिंगल स्पाउस। तुम बताओ नीरज कुमार। ये ज्यादा बेहतर है ना? तो सिंपली मैरिज बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल। क्या नहीं हुआ? तो जब एक मेल और एक फीमेल होगा शादी में, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी। इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इन द वर्ल्ड। All modern societies practice monogamy. Some tribals also practice monogamy. So marriage between a male and a female. ठीक है। One cannot marry one spouse more than one spouse at a time. अगर वाइफ और हस्बैंड जिंदा है, नो डाइवोर्स, तो आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है। मान लो इफ
a wife is dead, then that husband can marry another woman. मतलब वो भी गुजर गया, he can marry third woman. This is called serial monogamy. Serial मोनोगमी है लेकिन सीरियल मोनोगमी है? अरे इतना तो कोई थोड़ी मरती है, चलती रहेगी। तो सिमिलरली अगर मान लो एक हस्बैंड गुजर गया, एक बार शादी कर ले, दूसरी बार दूसरा भी गया, गुजर गया, नहीं तो डाइवोर्स हो गया, थर्ड से शादी किया, ये भी सीरियल मोनोगमी होगा। सन्निध ये लोग मोनोगमी प्रैक्टिस क्यों करता है? कुछ तो कारण होगा जो भाई इसकी चलते मोनोगमी करता है। बताओ, कुछ तो सोच तो होगा। ये सब के मामले में सोचा ही नहीं। तुम बताओ। ये कोई कानूनी नहीं है। थक जाता हूँ। ये कौन सा? नहीं तो उसको जो समझ में आ बोला, लेकिन तुम्हारा लॉज ऑफ लैंड कोई कारण नहीं है। देखो, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज is found in those societies which are characterized by monetized economy. They are using money as medium of exchange. They have access to advanced technologies. ठीक है। They practice endogamy. पता नहीं endogamy क्या है? उधर से देखो एक लड़का ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए अपना अपना देने दो, माना किसने किया? ठीक है। क्या बोला? थर्ड क्या बोला? इंडोगेमी। फोर्थ जो है, वन कैनॉट मैरी मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम। देन दे प्रैक्टिस, दे हैव सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या क्या पॉइंट बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दे हैव मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। सेकेंड जो है, दे हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज। थर्ड जो है, दी सोसाइटीज आर स्ट्रेटिफाइड। तो इट मे बी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, जो भी होगा स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए। इंडोगेमी। फोर्थ जो है, दी सोसाइटी डजंट अलाउ वन टू मैरी मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम। If these conditions exist in a society, they practice monogamy. अब बोलेगा इस सोसाइटीज, ये जो फैक्टर्स मैंने बोला, हाउ दे आर रेलिवेंट। देखो, when there are more than one spouse, there will be more children, है कि नहीं? And children are useful, they may be resource to a family, but they are burden also. क्या बोलता है? So if you have money and having access to advanced technologies, why you need human resource? You can buy cooperation. You can do lot of things with technologies. So therefore, you know, these societies prefer to have smaller family। और स्मॉल फैमिली के लिए आपको वन स्पाउस, वन मेल वन फीमेल ही चाहिए। अगर दो औरत से शादी करेगा, फैमिली बढ़ेगा कि नहीं? तो ह्यूमन कोऑपरेशन तभी चाहिए जब यू लैक मनी एंड टेक्नोलॉजी। तो जिनके पास देखना पैसा कम होगा और दे डोंट यूज मनी, दे डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज, वो क्या करेगा?
they need more human relation, human resource, और मैरिज so possible है. समझा ना? So these are the reason for monogamy. देखो वी प्रैक्टिस मोनोगामी, हमारे सोसाइटीज में सारे फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स मैंने बोला. ठीक है. देन polygamy. Polygamy in which there may be plurality of husband or plurality of wives. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीएंड्री. अच्छा, मोनोगैमी में ऐसे डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है, लेकिन यू शुड ड्रॉ दिस. बहुत सिंपल है, क्यों बनाओ? ऐसे बना दो. जानता है ना, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मेल, सर्कल फीमेल. When they are connected by parallel lines, they are married couple. तो यही वाला सही. मैंने एक लड़का को देखा, किसी को इस टेस्ट में ऐसे बनाता है, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा यूज में ही है. ये तब जरूरत है जब आपको इस डायग्राम हेल्प नहीं कर पा. तो दिस इज ऑल्सो मैरिड कपल, दिस इज ऑल्सो मैरिड कपल. तो कन्वीनियंटली यू कैन यूज दिस. Polyandry. In this marriage, there is plurality of husband. देखो, so mythologically we are aware of this marriage in the Mahabharata. That is Draupadi's marriage. ठीक है. आपका polyandry. तो empirically also many societies practice. कौन कौन सा सोसाइटीज? एक तो आपका खासा चक्राता near Dehradun. Actually, they live between Dehradun and Mussoorie. Tibetan. Then Toda of Nilgiri Hills. फिर आपका नायर ऑफ केरला. and many tribes in Africa. ये जो सारे ट्राइब है एक्सेप्ट तिबेटन्स, ऑल आर फ्रॉम इंडिया. और रियलिटी में ये करते थे, तो सिर्फ महाभारत में एग्जिस्ट नहीं करता था, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था. सुनाई दे रहा है? इतने कान वन बांध के बैठा हुआ है. इतने भी ठंड नहीं है, अभी तो शुरू है. हाँ हाँ है, अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ. देखना 3 डिग्री 4 डिग्री चलेगा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री. एक फैटर्नल पॉलीएंड्री, एक नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री. वो तो व्हेन हस्बैंड्स आर ब्रदर्स called fraternal polyandry, and it is practiced by Khasa, Tibetans and Toda as well. Fraternal.
ब्रदरहुड। अगर ऐसे करते हो ना तो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ऐसे करोगे तो हस्बैंड वाइफ। तो देखो सिबलिंग वाइफ, नॉन फर्टर्नल में ये वाला नॉन फर्टर्नल मीन्स हस्बैंड्स कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिली और डिफरेंट हाउस होल्ड्स। नॉन फर्टर्नल में एग्जाम्पल है नायर ऑफ केरला। नायर। So now the question is why some societies in the world practice polyandry? क्या जरूरत है? बिना जरूरत का कोई काम नहीं करता। ये मत सोचना जो कल्चर इज नॉट ए चॉइस, समझा ना? कल्चर इज ए नेसेसिटी, उसके सिवाय दे कैनॉट सर्वाइव। समझा? जो कोई आदमी चूज नहीं किया जो हम तो यही करेंगे, चलो आजकल ये सही नहीं लग रहा है, मोनोगमी कर लेते, तो इट इज ए कंपल्सन। तो देयर आर डिफरेंट कॉजेज फॉर डिफरेंट सोसाइटीज। तो एक कॉज नहीं है, अलग अलग कॉज है। जो खासन तिब्बतन्स दे प्रैक्टिस पॉलिएंड्री बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। क्या प्रैग्मेटिज्म है? देखो खासा हैड बीन लिविंग इन हिल टेराइन। तो चक्राता जो है, कोई देहरादून के आसपास घूमने गया कभी? ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, काफी सारे स्प्रिंग्स, अच्छे अच्छे स्प्रिंग। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो खासा की जो एरिया था ना, इट वाज इनफर्टाइल, यू कैन से a kind of barren land. So Khasa families had long tract of land, but mostly it was infertile. Now, if each brother married to individual wife, after some time they will have a large family. है कि नहीं? सबके अपना अपना बीबी है, अपना अपना चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हो जाएगा। तो दे हैव टू सेपरेट। अगर बहुत ज्यादा बड़ा फैमिली हो जाएगा, ज्वाइंट तो चल नहीं सकता ना। विद द सेपरेशन ऑफ ईच ब्रदर्स फैमिली, देयर प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी डिवाइडेड। सो नाउ दिस barren land, if shared by all the brothers, nobody's economy will be a viable economy. क्योंकि लैंड तो वेस्ट लैंड है, जितना उसको मिलेगा उससे परिवार नहीं चलेगा। लेकिन इफ दे हैव ए कॉमन वाइफ, दे विल हैव ए स्मॉल फैमिली वेयर फादर्स आर डिफरेंट, मदर इज वन ना, एंड इन दैट केस फैमिली कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑल्सो। कॉमन मदर है, डिफरेंट फादर है, वो सेपरेट केस होगा। So even they have wasteland, that can be a viable unit for the family. समझा ना? अगर सबका अपना अपना परिवार होता था तो एक समय जाके सेपरेशन इज कंपल्सरी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसको मिलेगा सबको, उससे परिवार नहीं चलेगा। लेकिन अगर कॉमन वाइफ होगा तो फैमिली भी छोटा होगा, फैमिली सेपरेट नहीं होगा, then they can survive somehow. That was the reason among Khasa as well as among Tibetan. If Tibetan were living in highland, it was also a wasteland. तिब्बत में आज भी वेस्टलैंड है, तो अब उस जमाने में यही हालत था। तो इसीलिए सेम कारण के चलते वो भी पॉलिएंड्री शुरू किया था, फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री।
But among Khasa, those families were little economically well. थोड़ा बहुत पैसा है. They married more than one wives instead of one. वो लोग क्या करता था? Instead of marrying one common wife, they married two wives and shared by all the brothers. And that form of marriage is called polygynandry. Polygynandry is like group marriage. In polygynandry, there are plurality of husband as well as plurality of wives. By all brothers are sharing more than one wives. तो क्या प्लुरलिटी ऑफ हस्बैंड भी है, प्लुरलिटी ऑफ वाइफ्स भी है, इसलिए नाम दिया था पॉलीगाइनेंड्री. पॉलीएंड्री प्लस पॉलीगाइनी, तो पॉलीगाइनेंड्री. नहीं समझा? अरे पॉलीएंड्री बोलो तो क्या है? प्लुरलिटी ऑफ हस्बैंड. पॉलीगाइनी क्या है? प्लुरलिटी ऑफ वाइफ्स. तो व्हेन all brothers are sharing more than one wives, so there is plurality of husband as well as plurality of wives. इसलिए नाम दिया गया था polygynandry. So it was done by only well of Khasa families. समझा ना? After independence, this area was extended with irrigation facilities by independent Indian government. And these tribal people were given subsidized fertilizers, pesticides, high-yielding varieties of seeds. That's why these areas have been fertile. अब रहा नहीं, वो पहले ऐसा barren land. तो अभी fertile है. Now production and productivity have increased many folds. Today they are economically well off, all Khasa families. So with the economic prosperity, they do not practice polyandry. They practice monogamy. तो आज की डेट में अगर वहां जाएगा ना तो कोई नहीं करता polyandry. When many of them do not know that they had a practice of polyandry in the past. But some Khasa family, once in blooming, rarely they go for polyandry. And today it is not for economic pragmatism. It is due to their tradition. क्योंकि Khasa believed, and they believe today also, as the they are descendants of Pandavas. Khasa लोग अपने आप को मानते हैं as a descendant of Pandav. तो पांडव का जो प्रैक्टिस था पॉलीएंड्री, तो एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन रियली सम खासा फैमिलीज गो फॉर पॉलीएंड्री. तो कभी कभार आप न्यूज में सुन लेगा 15-20 साल में एक जो कोई खासा ने कर लिया पॉलीएंड्री. तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, बिकॉज दे बिलीव्ड देमसेल्फ as the descendants of Pandav. पांडव के डिसेंडेंट है, तो पांडव करते तो हम भी करेंगे. तो प्रेजेंटली द नॉर्म इज मोनोगेमी, वो खत्म हो गया. तो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म अमोंग खासा एंड तिब्बतन. खासा को ना जॉनसरी भी बोलते हैं. टोडा जो है, दे आर पेस्टुअल ट्राइब्स लिविंग इन नीलगिरी हिल्स, जो साउथ इंडिया में
तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में भी है थोड़ा बहुत, एंड एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज टू ऊटी। यही है, ऊटी गया है? तो ऊटी में देखना जो हिल में छोटा छोटा क्लस्टर है ना, दिस आर टू द विलेज, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग पेस्चुअलिज्म, एंड लोकली दे आर कॉल्ड बफेलो मैन। बफेलो मैन, ये बफेलो रियर करते हैं। सो अमोंग खासा, in the past, there was a tradition to sacrifice their first female child to their family deity. तो फैमिली में जो फर्स्ट फीमेल चाइल्ड होता था उसको बलि चढ़ा देते थे उनके फैमिली डेटी में। तो बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे कास्ट ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे एक जमाने में। तो एज ए रिजल्ट female sex ratio went down to the extent that each male in the society could not have afforded to have individual wife. इतने फीमेल सेक्स रेशियो कम हो गया था जो उस सोसाइटी में हर मेल इंडिविजुअल वाइफ जुगाड़ नहीं कर पाता। तो क्या किया? शेयर वाइफ। तो ऑल ब्रदर्स शेयर्ड ए कॉमन वाइफ। तो इट वाज ड्यू टू रिलीजियस कंसिडरेशन दे डेवलप दिस प्रैक्टिस। यू नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड ह्यूमन सैक्रिफाइस किया था ना 1828 शायद। अरे सती कहां से लिखा है? हा? मैं सती का सर 1828, तो ये सर 1828 नहीं सर, और कुछ होता जब भी है उससे सती से पहले हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड ह्यूमन सैक्रिफाइस, देन दिस खासा वी आर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी डजंट अलाउ दिस नॉनसेंस। ऐसा मतलब तो क्या है, टुडे दे हैव adopted monogamy, and moreover now male female sex ratio is quite balanced. वो लोग मोनोगमी करते हैं। तो I talked to some Khasa. I visited Uti, and you know many of them I didn't have got to ask them, क्योंकि यार मैं पूछ लिया, मार मुड़ दिया। वो लोग वहां के तमिलनाडु की लैंग्वेज बोले, लोकल लैंग्वेज बोले। क्या समझ के रखा है उनमें? पीसीएस ऑफिसर भी है, स्कूल टीचर भी है। ये जो मैं कह रहा हूं 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात, जब ह्यूमन सैक्रिफाइस चलता तब करते थे सब चीजें। अभी टोडा लोग गाय तो पालता है, इन एवरी टोडा हाउस होल्ड देयर विल बी ए कैटल देन। तबेला जरूर रहता है, लेकिन वो लोग पढ़ा लिखा है। तो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ट्राइब है ना, पढ़ा लिखा भी है और वेल एजुकेटेड भी है। तो उनमें से काफी सारे लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में है, पुलिस में है, स्कूल टीचर है। वैसे भी तमिलनाडु में पढ़ा लिखा अच्छा होता है, वहां पे लिटरेसी रेट ठीक है। क्या समझ के रखा? वो लोग इंग्लिश नहीं जानते। तो मुझे लगा मुझे पूछना नहीं चाहिए, तो इनडायरेक्टली मैं पूछ रहा था, लेकिन ज्यादातर 7-8 लोगों से बात किया था, उनको मालूम ही नहीं ऐसे कुछ होता। और किसी का ये सब बहुत अच्छा ट्रेडिशन तो है ही नहीं, कोई इससे प्राउड तो फील करेगा नहीं ना, तो आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। तो मैंने इनडायरेक्टली पूछ रहा था, उनको पता ही नहीं। बच्चे बुजुर्ग भी थे, एक रिटायर्ड टीचर भी था। ऐसे ही मतलब मैं 4-5 दिन था, तो एक दिन तो मैं अपने होटल की एक आदमी से बोला, चल टोडा को जानते रहा? हाँ सर, टोडा विलेज बहुत है यहाँ पे।
तो लेके गया था। और ऊटी ऐसे भी बहुत अच्छा इलाका है, पता है। ऊटी में कितने फिल्म का तो शूटिंग होता है। टी गार्डन है, और इतने सुंदर सुंदर टी गार्डन है, जाके उधर बैठे रहेगा तो टाइम पास हो जाए हैं? यहाँ पे गरम नहीं लगा। अगर समय मिले ना जब जाना, तो बढ़िया जगह है। तो जब भी जाना जाना। ये तो टोडा हो गया, अब नया। सही में बहुत अच्छी जगह है तमिलनाडु की। ये जो ऐसे भी ना बहुत हरियाली है। हाँ, नीलगिरी हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। समझा? दूर से काला काला लगता है, तो पेड़ ही पेड़। और हमारे यहाँ लद्दाख जाओ, एक पेड़ नहीं दिखेगा। वहां पे ऑल आर नेकेड हिल्स। और सर्दी में जाएगा तो बहुत कोल्ड है, गर्मी में भी ठंड रहता है। अब नहर, नहर जो है, they were a warrior tribe living in Kerala. And they had to maintain their territorial integrity on their own. अपना जो टेरिटरी थे उस ट्राइब का, that was to be maintained by themselves. So therefore, adult Nair spent most of the time on the frontier to maintain territorial integrity. ज्यादा टाइम फ्रंटियर में रहता था, जो मेल लोग होते थे, एडल्ट मेल. So under these conditions, they had developed a unique kind of marriage custom. क्या है वो? You know, young Nair boys and girls, with the consent of their household को in Malayali called Terabad. So with the consent of household, they decided to marry. And the marriage ceremony is called Thalikettu Kalyanam. Thalikettu Kalyanam. So in this ceremony, Nair boy ties a necklace, जिसको मंगलसूत्र जैसे बोलता है, around the neck of her wife. After doing all these things, means once Thalikettu Kalyanam is completed, immediately marriage is dissolved. शादी हो गया, marriage immediately dissolve भी हो गया. Now this Nair boy would never meet his wife in the life. अब सुन तो ना, पूरा कहानी तो सुने तब, क्योंकि with this ceremony, Thalikettu Kalyanam, Nair girl attains the status of womanhood. जब तक शादी नहीं होगी एक लड़की की, उसका स्टेटस वुमेनहुड का नहीं, मतलब गर्ल ही रहेगा. Now they are separated. Now this woman is permitted by the society to have
intimate physical relationship with any other boys in the community except that husband, who is called ritual husband. उनके कम्युनिटी में किसी भी बॉय के साथ from other family he can develop intimate relationship, and these boys are called lovers or visiting husband, and their number can be 12 only. If it is more than 12, girl can be punished. Out of this relationship she can give birth to children, and usually children are born out of this relationship only. And fatherhood of that children goes to ritual husband, not visiting husband. तो आप समझा शादी का मतलब? नहीं, मुझे आप बताना शादी का मतलब क्या समझा? ये जरूरत ही क्या था? अभी पूछ रहा था ना, नहीं क्या समझा? क्या बोल रहा है? ऑपरेशन क्यों? बच्चे हो रहे ना? हाँ, क्यों बढ़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ता है नंबर ऑफ वाइफ की चलते, नंबर ऑफ हस्बैंड की चलते नहीं. वाइफ कैन गिव बर्थ टू ओनली वन चाइल्ड एट ए टाइम. साल में एक ही बार दे सकते ना. अगर उनके 12 वाइफ होता था तो 12 बच्चे होता था. जब वाइफ एक ही है तो चिल्ड्रन बढ़ेगा नहीं. तो अभी तक समझा नहीं. टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज इन दिस सोसाइटी? जब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहेगा, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज इट इज डिसॉल्व्ड, तो जरूरत क्या था? तब से फालतू सोचने काम की जैसी नहीं सोचा. षड्यंत्र कहां पे हो गया? भगा नहीं दिया, क्योंकि उसको ये फ्रंटियर में जाना है अपना टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए. देखो, फर्स्ट पर्पस ऑफ द मैरिज इज स्टेटस ऑफ वुमेन. क्योंकि इफ दिस गर्ल इज नॉट अटेनिंग द स्टेटस ऑफ वुमेनहुड, शी कैनॉट हैव एनी beating husband. And the question of fatherhood, if there are multiple visiting husbands, who will be the father? The fatherhood of the children go to the ritual husband. तो देखो, in any marriage there should be legitimate husband, there should be legitimate father. तो अगर मैरिज नहीं होता था, husbands how could have been legitimate? How children could have been legitimate in the society? The children born out of this relationship, they enjoy equal legitimate right in the society. उस सोसाइटीज में जितने चिल्ड्रन हैं सब ऐसे ही बॉर्न हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, not illegitimate children, in Hindi which is called lavaris. समझा? तो समाज में अगर कुछ होता है तो उसको सोच समझ के डेवलप किया जाता है. तो उन सोसाइटी की जरूरत थी, क्योंकि एडल्ट मेल हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द फ्रंटियर. तो अगर कुछ मैकेनिज्म नहीं था तो उस गर्ल को कौन देखेगा? जो चिल्ड्रन बॉर्न हो उसको कौन देखभाल करेगा? So with the advent of British, this territory was occupied by the British regime. Now they had no job to defend their territory on their own. So they had given up this practice and they had developed and adopted monogamy only. And today Nair is not a tribe, it's a dominant caste in Kerala. And you know, surprisingly, Shashi Tharoor belongs to this community. आज की डेट में नायर जो है, दे आर डोमिनेंट कास्ट इन केरला. डोमिनेंट कास्ट पढ़ाया था ना, वो केरला में वो लोग हैं. और जो कांग्रेस लीडर
great author, retired United Nations एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शशि थरूर, वो भी नायरी है। अब समझा ना? तो देखो, नायर में पॉलिटिकल नेसेसिटी, टोडा में रिलीजियस कंसिडरेशन, और खासा में क्या था? इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। हालात बदल गया, वो अपना ट्रेडिशन भी बदल दिया। सो व्हेन देयर इज more than one husband, then there is a question of fatherhood, है कि नहीं? तो how they determined father? देखो, there were different norms in different societies. जैसे कि among Khasa and what is called Tibetan, the norm was eldest brother will be the father, even he is not a biological father. 4-5 भाई अगर होगा, जो एल्डेस्ट ब्रदर होगा, ही विल बी द फादर, इवन ही इज नॉट ए बायोलॉजिकल फादर। अगर वो गुजर गया मान लो, तो सेकंड एल्डेस्ट वन, सेकंड भी गुजर गया तो थर्ड। ठीक है, ये नायर और तिब्बतन में। टोडा में क्या है? दे हैड ए कस्टम ऑफ बुएन एरो सेरेमनी, and any of the brother willingly can perform that ritual, bow and arrow ritual. कोई भी ब्रदर willingly perform that ritual, जरूरी नहीं है जो बड़ा वाला करे, छोटा वाला, जो चाहे। And what is that ritual? When wife is pregnant, she and the brother who is willing to perform the ritual go to nearby forest. In the forest, that willful brother make a bow out of tender branch of available trees, and then that bow is gifted to his wife. बच्चा हुआ ही नहीं, he becomes father. So this is the only community in the world where people become father before giving birth to children. जब बच्चा होगा तभी तो फादर होगा ना। तो इस सोसाइटी में बच्चों से पहले ही आदमी बाप बन जाता है। तो ये है पूरा, जो पॉलिएंड्री तो आता रहता है। ठीक है, तो पॉलिएंड्री की सारी कहानी समझ में आ गया। Here individual become father before the birth of a child. अच्छा, अब एक पॉलीएंड्री पे फैमिली के दिखाना ना। पॉलीएंड्री मैंने डिस्कस कर दिया, उसका फैमिली के दिखाना। देखते कैसे फैमिली।
इसका डिफिनेशन दी। ठीक है। काफी कुछ मिस कर दिया। बताता हूँ, दिखाएंगे, देखना। मिस कंप्लीट नहीं कर पाए जो। एक पॉइंट मिस किया। ऑनलाइन वाले कुछ करता ही नहीं क्या? हम्म। जी। तो कॉजेज में आ जाएगा। मिस किया। लिखो। इसको ना अलग अलग मत देना ना, एक अलग पॉइंट दे देना। पॉइंट तो मिस नहीं किया, लेकिन ऑर्डर में थोड़ा दिक्कत, अरेंजमेंट में थोड़ा दिक्कत। पहला कोई आया कॉम्पीट करके। हम्म। सिर्फ दिशा का ही कंप्लीट। फीचर्स ऑफ मैरिज की क्या जरूरत है विशाल? फीचर्स ऑफ मैरिज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, रेलिवेंस ऑफ पॉलीएंडी इन प्रेजेंट सोसाइटी, ये कौन सा पॉइंट है भाई? तो वही यू आर एडिंग पॉइंट फ्रॉम योर साइड। सुशील का एक पॉइंट मिस है। विशाल फालतू पॉइंट डाल के रखा, काम का पॉइंट नहीं दिया। डेफिनेशन ऑफ मीनिंग, डेफिनेशन एंड मीनिंग। ये लिखना चाहिए, और ये सब लिखो। लिखो। गलत लिखा। कंक्लूजन जरूरत बोला नहीं था, लेकिन गलत लिखा। कंप्लीट। देखो, सिर्फ दो स्टूडेंट छोड़ के, ईशा और गार्गी छोड़ के सब लोग एक ना कोई कुछ पॉइंट, कोई कुछ मिस। डिस्कशन के बाद तो मिस करना ही चाहिए।
एसी किसने जला दिया? ये तो एसी चला के तो मरेंगे क्या ठंड में? इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा गया। इसी में you have to talk about changes in their marriage due to changes in condition. अच्छा, नायर में फादरहुड जो है दैट गोज टू रिचुअल हस्बैंड। दिन भर चला था जनरेटर शायद। So changes in their prevailing form of marriage should be discussed here.
हम्म, हाँ 1 जनवरी की छुट्टी रहेगी। अच्छा, कॉमन क्लास जो है ना संडे को होता था, सैटरडे को करेंगे, क्योंकि संडे कुछ लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के जो ये क्रिश्चियन है, तो कल ऐसे नॉर्मल क्लास होगा, सैटरडे को कोई मैराथन वाली क्लास देंगे, ठीक है। 9 से ही रात 8:30 तक तुम 11:30 से नहीं नहीं, मैं जूलॉजी की भी क्लास लूंगा नहीं उस दिन। तो 9.4 पहला क्लास में हो जाएगा, फिर 9.5 भी हो जाएगा, 9.7 हो जाएगा, तो हमारा 9.6 9.8 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग 10 तक पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद पूरा एक दिन लगेगा भी नहीं देखना। 9 से करेंगे, 9 बजे से। आती है? कहाँ आती है? आती है? ये नहीं आती है, तुम क्यों नहीं आती है? जीएस से आईएएस नहीं बनेगी? देख लिया, लेकिन आईएएस तो बनेगा एंथो से ही। इनका बायोलॉजी की बैकग्राउंड है ना, तो थोड़ा दिक्कत कम होगा। कहाँ से आती है तुम? रोहिणी तो दूर पड़ता है, यहाँ से 3 मेट्रो लेता है। ज्यादा दूर है ही नहीं, लेकिन मेट्रो 3 लगते हैं। एक तो ये शायद राजीव चौक जाते हैं, वहां से लेती है शायद यहाँ का आईएसबीटी, ऐसे घूम के जाता। पैदल चली जाएगी जल्दी। सीधा ही तो है, कन्हैया नगर होके। लिख लिया? एक बार मैं स्टूडेंट था, तो मैं गंगाराम में ना, मुझे कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम था, तो मैंने दिखाने के लिए आया। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से फिर राजीव राजीव चौक, फिर पैदल चलो। यहाँ से पैदल चला गया, 1.5 घंटे में पहुंच गया मुखर्जी नगर। और बस बस लेके जाता था, उतना ही नहीं लगता। सीधा गली गली से। कितना यहाँ से मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर ही है। तो 1-1.5 घंटा तो बस में, मैं घर ही देख के गया, 1.5 घंटा लगा। अब शॉर्टकट में जा सकते ना। हाँ अकेले थे, और क्या? कोई रहता तो थोड़ी जा सकता था। तब तो ट्रेन नहीं तो बस में जाओ, बस में बहुत भीड़ होता है ना, ऐसे भीड़ होता ना तो इंसान नहीं बैठ सकता। एक है 100 नंबर। हो गया। अब पॉलीगैनी। In this marriage, there is plurality of wives. So, more than one wife. अच्छा, कौन लोग प्रैक्टिस करता है? अरे राजा महाराजा ऐसे। अफ्रीकन, मेनी अफ्रीकन ट्राइब्स।
हिंदू लोग भी करते हैं बोला. Before 1956, Hindus also practiced polygamy. ये आपके एग्जाम्पल. Many African tribes, pre-independent Bengal due to hypergamy, Naga, northeast की, due to sense of heroism, then societies frequently facing war. लिखा. देखो, there are some marginal cultivators in among African tribes. Marginal cultivators. They practice cultivation on a small scale, 3-4 acres. And usually they do not hire laborers from outside.
it is family which provides labor to own farming. So under this condition, they prefer to marry more than one wife. If there are more wives, there will be more children. And these children can provide helping hand to family farming. So those are marginal cultivators. They tend to have polygamy. तो अफ्रीका में, इंडिया में भी ऐसे ट्राइब है जो पॉलीगमी करता रहता है. And pre-independent Bengal, before 1956, when Hindu Marriage Act was enacted, Bengalis practiced polygamy due to hypergamy. What is hypergamy? Hypergamy. It's called the अनुलोम marriage in Hindu. जानता है? It is a marriage between higher caste male and lower caste female. हाँ. So, उसको हाइपरगमी नहीं बोलता. इक्वल होगा तो हाइपर कैसे होगा? हाइपर नहीं होता. तुम्हारा नियम होगा. तुमने आपने बनाया होगा. लेकिन हायर कास्ट ग्रूम होता है, लोअर कास्ट ब्राइड होती है. एंड द रीजन इज by making matrimonial alliance with higher caste groom, they can elevate their social status. And in this marriage, lower caste family give their daughter in marriage to higher caste groom with lump sum dowry. Dowry भी दिया जाता. That's why those were higher caste Bengalis and जमींदार. सिर्फ हायर कास्ट होने से नहीं होगा, जमींदार भी होना चाहिए. गरीबों के साथ कौन शादी कराएगा? हायर कास्ट मान लो गरीब है तो क्या फर्क पड़ता है? हायर कास्ट अगर अमीर है तो उसके घर में बीवियों की कमी नहीं होती थी. समटाइम्स लिटरली दे मैरिड hundreds of wives. And it is locally called Kulin Protha. Kulin. So, जो ब्राह्मण, जो हायर कास्ट ब्राह्मण थे, जमींदार थे, इनके लड़कियों की शादी नहीं होता था. क्योंकि हायर कास्ट अगर हायर कास्ट शादी करेगा तो उनको कुछ मिलने वाला है नहीं. बट इफ दे आर मैरिंग लोअर कास्ट girl, they are getting girl as well as lump sum dowry. So many higher caste girls lived as spinster. जो unmarried male को the bachelor, unmarried female को the spinster. और ये लोग लोअर कास्ट के घर से 100 लड़की लेके आ जाते थे. And yes, there are incidences. A old man at the age of 80, he is getting married in the morning. In the afternoon, he died. Both incidents है. And these women, when they become widow, they all came to Vrindavan widow home. Vrindavan में ना widow home काफी सारे हैं. This widow home are filled of these widows from Bengal. So the reason is hypergamy. After Hindu Marriage Act in 1956, polygamy is prohibited among Hindus. So today, this higher caste jamindar's family do not practice polygamy. जबरदस्ती मोनोगमी करते. Then Naga, due to sense of heroism, जो नागा जो है ना ट्राइब, they also practiced polygamy. Among Naga, there was a practice of head hunting. Means Naga tribes raided each other and they beheaded adult members of raided party. मान लो Naga A is raiding Naga B.
So they'll try to behead each other's adult members' head. And after beheading, they collect this head and they make garland of the skull of this head and hang in the courtyard. And they married to this beheaded person's wife. Means if you have 10 wives, it means you have beheaded 10 men. It's a matter of right. तो मैंने इतने लोगों की सर कट के हैं. So Naga is the only head hunting tribe in the country. हमारे देश में Naga is the only head hunting tribe. So that was the sense of heroism. जितने लोगों को काटेगा उनके वाइफ इनको होगा जो काटने वाला होगा. अरे हेड हंटिंग इज ए मैटर ऑफ राइट. आपने कितने हेड हंट किया, ठीक है, और उनके सर के माला बना के स्कल का अपने जो अंगन होता था उसमें टंगा के रखता था. सोचो वो आदमी तो प्राइड फील करता था, उसके वाइफ लोग डेली देखता था. अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशन है तो रोती होगी, अगर बुरा रिलेशन तो डेली हंसती होगी, देखो टंगा हुआ. किसी की पहले से 5 बेटी हो, किसी को 5 तो पांचों उसका वाइफ हो जाएगा. जो उसको मारेगा 5. हाँ, जाएगा कहाँ. इसलिए तो सेंस ऑफ हीरोइज्म है. समझा. देखो किसी की सर काट देना आसान बात है क्या? रिस्क अरे रिस्क का नहीं, बहुत मुश्किल का काम है. किसी की सर काट के लाना. माला में पिरोगे. वो भी शादी से तो बात हैं? क्या बोल रहा है? वो भी शादी से तो बात होगा, क्या पता दूसरा कोई काटने की लाए हो. हाँ, ये भी हो सकता है, उसका कब काट के ले जाए. Then those societies are frequently facing war. They also have this fact. क्योंकि in war, usually adult male dies. War में कौन मरता है? Adult male. So in these societies, women could not have individual husband. They share a common husband. तो ये आपका पॉलीगैमी. अब आ जाओ मैरिज बेस्ड ऑन रूल्स. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स. पहले हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रिस्क्राइब रूल. Prescribed rules of marriage are those rules which must be followed by members in a society at the time of marriage. If anyone violates these rules, he has to face severe punishment, sometimes honor killing. अगर इस रूल्स का फॉलो नहीं करोगे आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि दिस रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी. दे हैव टू बी फॉलो. इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ फॉलोइंग दिस रूल, वायलेटर्स विल बी पनिश्ड सीवियर. मतलब ऐसे नहीं है जो छोटा मोटा पनिशमेंट, मार भी सकते. जैसे कि ऑनर किलिंग इज पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल. There are two types of prescribed rules. One is exogamy, another one is endogamy. Exogamy क्या होता है ना? Exogamy. दो रूल है, एक है exogamy, एक है endogamy. सुनना तो है ना? तो क्या है? The group may be clan or caste.
Exogamy means marrying outside one's own group. And it may vary from society to society. जैसे कि मुस्लिम में they don't marry within the nuclear family. But beyond nuclear family, they can marry. So they practice nuclear family exogamy. Hindus में क्या है? We practice clan exogamy. Means we should not marry within one's own gotra. Because members of a gotra are believed to have descended down from a common ancestor. So they are brother and sister. How brother and sister can marry? अगर आप गोत्र में शादी कर लोगे तो आपको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा. जैसे कुछ साल पहले मैंने सब पहला दिन बताया था, रेवाड़ी में ऐसे शादी हुआ था. जब कपल्स को पकड़ा लिया गया तो बच्चा भी हो गया था. बच्चे को तो नाजायज डिक्लेयर कर दिया और कपल को बोला भाई बहन बोलो. फिर मैरिज वाज डिसॉल्व और उनकी जो फैमिली थे सबको बॉयकॉट कर दिया. खाप पंचायत. तो हरियाणा में बहुत चलता है. हरियाणा में पहले था विलेज एक्सोगैमी. One cannot marry within one's own village because in Haryana usually a village is inhabited by a gotra. तो all the members of a village are brother and sister. तो आज की डेट में क्या है, विलेज के डेमोग्राफी भी चेंज हो गया. A village can be inhabited by more than one gotra, and at the same time there is crisis of girls in Haryana. So they have diluted this gotra, so village exogamy. आज की डेट में one can marry within the village. पहले 2 साल पहले भी नहीं था. तो ऐसे क्यों करता है? Why exogamy is a rule? क्या है? क्या बायोलॉजिकल रीजन बताओ? हाँ, वही रीजन है. Because when you marry with close relatives, there may be some genetic diseases can be transmitted to next generation. And these diseases are usually dreaded disorder that can be prevented but cannot be cured. इसीलिए only solution to this problem is exogamy. Don't marry with close relatives. तो इंडोगेमी, इंडोगेमी का मतलब क्या है? Marrying within one's own group. It may be caste, maybe class, maybe religion. So caste endogamy is a rule in Hinduism. We also practice religious endogamy, marrying within one's own religion. Then there is another example, tribal endogamy. One should marry within one's own tribe. ठीक है. So what is the reason of endogamy? It helps in cultural retention. Means आपका जो culture है, you can retain throughout generation. क्योंकि if you marry within your own class, within your own caste, your and your in-laws caste will be same. And all the caste
having their respective caste identities, caste practices. जब आप सेम कास्ट में शादी करोगे, आपका जो कल्चर है वही रिटेन रहेगा. You can maintain your caste purity, and at the same time you can avoid cultural hybridization, because when a girl comes from different caste, she comes with different practices also. So when her cultural practice is different, your cultural practice is different, so there can be a problem of adjustment. And you know, adjustment is a serious issue after marriage. So if one is marrying within one's own caste or class, that problem can be avoided. In case you are marrying beyond your caste, there will be cultural hybridization, which may lead to maladjustment. And if cannot be sorted out, it may result in divorce. Divorce कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता ना, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं. You know, in the recent survey by Times of India, only 5% Indian practice ये intercaste marriage. 5%. तो जो 5% कितने कम है? So do you think 95% Hindu Indians are conservative? ऐसा नहीं है. Casteist ऐसा भी नहीं है. When many liberal people, they do not practice casteism, they don't believe in the world of caste, but at the time of marriage they prefer to marry within their own caste because of this problem. कौन रिस्क ले? वो तो इंटर रिलीजियस कर लिया था. कास्ट तो छोड़ो, ज्यादा ही समझदार बन गया था. अभी किससे शादी किया? आइस कोई कास्ट थोड़ी ना है. तो मैंने देखा ये शादी क्यों टूट गया. अरे ये तो कारण ये अलग अलग रिलीजन भी हो सकते कारण. चलो उनका अपना पर्सनल लाइफ. मैंने आरएसएस वाले मना किया. आरएसएस वाले मना किया था, इसके पेरेंट्स को बोला था मत करो शादी. ठीक है. नहीं, ये भी न्यूज में आया था. ये फेसबुक पे तो लड़का लोग यही करता ना, पढ़ता कम, टीना डाबी क्या करती है, किससे शादी कर रहा है, यही सब देता रहता है. मैं फेसबुक ही छोड़ दी. एक तो अबोध जब आता आ जाता है, जोकर जी की तरह बात करता है, अवध ओझा, और एक हीरो है, यही चाक रखा है. ये लोग क्लास में पढ़ाता है कि नहीं पता नहीं. सब ये अवध ओझा की क्लास यही लोग करते ना. Why you're disowning? ऐसे ना इतना सा तो है, कैसे से बातें करता मैं तो इतना ये तोड़ दूंगा वो तोड़ दूंगा. तो एक रीजन क्या है? रिटेंशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, देन अवॉइडेंस ऑफ डाइवोर्स. थर्ड जो है नो एंडोगमी, नो स्ट्रेटिफिकेशन. अगर मान लो कास्ट मेंबर्स आर नॉट मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट, हायर कास्ट लोअर कास्ट के साथ, दलित हायर कास्ट के साथ शादी करता रहेगा, 100 साल नहीं लगेगा कास्ट सिस्टम खत्म होने में, पता है. एंड दैट्स व्हाई मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स गिव इंसेंटिव्स टू कपल्स ऑफ ये इंटरकास्ट मैरिज. राजस्थान में तो 5 लाख दिया जाता. हाँ, जहां पे कम होता ना वहां पे ज्यादा दिया जाता. बंगाल में देता ही नहीं. वहां पे तो यही करते रहते लोग. फिर भी राजस्थान में लोग करता कहाँ. पहले क्या करता था, शादी कर, अच्छा इंटरकास्ट मैरिज हो तो
ब्राह्मण क्षत्रिय से अगर ऐसा नहीं होता, हायर कास्ट इज मैरिंग दलित, तब होता है इंटर कास्ट। समझा ना? ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण क्षत्रिय से कर लिया, क्षत्रिय बनिया से कर लिया, उसको नहीं माने, वो तो सेम कास्ट हो गया। मेंबर्स ऑफ हायर कास्ट शुड मैरी मेंबर्स ऑफ दलित, तब जगह होगा। तो राजस्थान में क्या करा था, शादी करके 5 लाख लेके फिर तलाक दे देता। तो ये सरकार को पता चल गया, और सरकार ने बोला शादी करो, 5 साल साथ में रहो, अगर सक्सेसफुली 5 साल साथ में रहा तो आके ले जाओ। तो अब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि अब टारगेट शादी नहीं था ना, टारगेट था पैसा। और 5 साल चलने के बाद कौन छोड़ता किसी को, है? अरे वो कौन देख के आधा कौन बात है? तो नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। अब शादी करके आओ तो नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को मिल जाएगी। अगर कोई लड़की मान लो किसी लोअर कास्ट से शादी कर लिया इन द होप ऑफ गेटिंग रिजर्वेशन, उसको ना कुएं में कूद के मर जाना चाहिए, उसको क्यों मिलेगा भाई? शादी के थ्रू थोड़ी ना होता है। हाँ, उनके जो बच्चा होगा उनको मिल जाएगा। वो बेवकूफ करते हैं ऐसे, सोचता मैं दलितों से शादी कर लेता हूं तो मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा। हाँ? बच्चे को तो मिल जाएगा, लेकिन लड़की को क्यों मिलेगा? नहीं, कुछ लोग समझते नहीं है, सोचता है शादी करने से भी मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। अगर कोई लड़का मान लो दलित से शादी कर लेगा, दलित लड़की से, उसको थोड़ी रिजर्वेशन मिलेगी, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। नहीं, मेल के केस में तो किसी को नहीं मिलेगा। अगर मान लो मेल है हायर कास्ट और फीमेल है दलित, मेल सोचता मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा तो मुझे एससी स्टेटस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वी इनहेरिट फादर्स स्टेटस, फादर का स्टेटस क्या है? सोशल हायर क्लास है, सॉरी हायर कास्ट है, तो बच्चे भी तो हायर कास्ट ही होगा, मां से थोड़ी ना मिलता है। तो सब गई भैंस पानी में। तो ऐसे बहुत लोग कर लेते हैं। जो थर्ड जो कारण है, दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल्स डू नॉट प्रैक्टिस इंटर ट्राइबल मैरिज ड्यू टू फियर ऑफ मैजिक, काला मैजिक, काला जादू। They believe that when girls come from other tribes, they will be notorious in black magic. So don't marry from outside. They will destroy your family, your community. For example, Karol tribe in Old Mirzapur. Karol tribe in Old Mirzapur. They don't allow intertribal marriage because of that reason. If a girl comes from other tribes, she will be notorious in black magic. She will destroy their community. तो लोग ना कितने बेवकूफ हैं, हाँ? इस रिजर्वेशन के चलते क्या क्या कर लेता होता, और पता है कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। जो हायर कास्ट और ओबीसी के बीच में 15-20 नंबर का डिफरेंस होता है मेंस में। फिर आपका हायर कास्ट एससी में 25-30 मार्क्स, फिर आपका हायर कास्ट एसटी में 60-70 मार्क्स, उसमें थोड़ा सा होता है। अब बताओ 15 मार्क्स होते कितना? 1% भी नहीं है। अगर मान लो कोई ओबीसी से शादी करते इस उम्मीद पे, 15 मार्क्स नहीं तो कर रहा है, हाँ? तो 15 मार्क्स नहीं, 15 मार्क्स मतलब क्या होता है? शायद 1% से भी कम है। अगर एससी से शादी करेगा तो 25 मार्क्स के लिए शादी कर रहा है, मतलब 1.5% हो रहा है, तो मतलब कितना मूर्ख है। इस चलते तो शादी करना नहीं चाहिए। अगर किसी का मतलब अफेयर है कर लो, अब मुसलमान से ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन
रिजर्वेशन की चलते करना, ये तो बिल्कुल है। 25 मार्क्स मतलब समझ रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन सही लिखे तो हो जाएगा। क्यों आज 3-4 क्वेश्चन से साल भर अगर ठीक से पढ़ लेगा तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। अरे ऐसे ऐसे केस स्टडीज है, सुनेगा ना तो पगला जाएगा, जो विश्वास ही नहीं करता। एक केस स्टडी है इन केरला। ए बॉय हैज acquired a PMT seat in Kerala Government College on the basis of SC quota, but that boy actually belonged to GL category. तो लोगों को तो पता चल ही जाता है, ये जाके कंप्लेन कर देता है। तो कोर्ट में जब उनको बुलाया गया, उसके मामी क्या बोलती पता है? जो सी इज माई फॉर्म बट हर माई हस्बैंड इज नॉट हिज फादर, हिज फादर इज ए माई नेबर हु इज दलित। माँ ऐसे टेस्टिमोनी दे रहे, फिर बोला DNA टेस्ट कराओ, फादर उसका हस्बैंड ही निकला। अब बेटा और माँ जेल। वो तो फ्रॉड हो गया ना। वो बोला उसका कुछ नहीं, वो तो नहीं, पड़ोसी थोड़ी ना जाके बोला। जब वो है ही रियली में तो उसके हस्बैंड ही फादर ना, तो पूरा फैमिली गया है। उस कॉन्स्पिरेसी में तो हस्बैंड भी था। ऐसे ऐसे ये राम आहूजा की किताब में देखना कि स्टडीज ऐसे ऐसे देगा। कभी सोच सकता है ऐसे कोई माँ करेगी? तो कोई माँ की फादर भी क्यों करेगा? ऐसे लोग करते हैं। तो मुझे पता नहीं PMT में कितना लगता है इस ईयर जेल में। तो 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करते इतनी बड़ी बदनाम। तो ऐसे ही है। Preferential rule of marriage means these are the rules of marriage which are preferred to be followed at the time of marriage by members in a society. Preferably should be followed. तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। In case of violation of preferential rule, violators are not punished severely. He or she may face gossiping, ridiculing, लोग थोड़ा मजाक कर लेगा, थोड़ा सा छोटा मोटा सैटायर कर लेगा, जो बड़े आदमी बन गए। सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दीज आर कजन मैरिज, देन लेबिरेट, सरोरेट, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी। तो पहले कजन मैरिज कर लेते हैं।
The cousin marriage. There are two types of cousin marriage. Cross cousin marriage. Parallel cousin marriage. What is cross cousin marriage? तनु, ये तुम्हें बहुत बार बोला भी है. Cousins कैसे? ये है मैरिंग फादर सिस्टर्स डॉटर और मैरिंग मदर्स ब्रदर्स डॉटर. ईगो मैरिंग फादर सिस्टर्स डॉटर मदर्स ब्रदर्स डॉटर.
लिख दिया, मैरिज बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ different gender and same generation having common ancestors in the recent past. So on mother's side it is called maternal cross cousin, father's side called paternal cross cousin. एग्जाम्पल कौन कौन है? मेनी साउथ इंडियन communities practice cross cousin marriage. Then in Maharashtra people also practice cross cousin marriage. लोग हिंदू हैं, मुसलमान नहीं. और महाराष्ट्र में तो काफी लोग करता है, साउथ इंडिया में भी कर लेता है ना ये वाला बात. कि क्यों करता है बताओ? Why people practice cross cousin marriage? Stronger. तो शादी ऑलरेडी हो चुका है इनके बीच में, तो फिर स्ट्रॉन्गर तो है ही. इस फैमिली तो शादी ऑलरेडी है ही, फिर स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? पहले से पता लग जाता है कि कौन पार्टनर. अरे नहीं ऐसा नहीं. अच्छा एक चीज बता, किस नजर से वुमेन एम्पावरमेंट है बताना, किस नजर से ये बता है, किस नजर से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है? ट्रस्ट मतलब तो शादी तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर ट्रस्ट का डबल डबल ट्रस्ट. social issues में पड़ा था. North people will prefer to have a relationship like far relationships, but in South, they used to have a relationship within the family. क्यों करता है? क्यों तो बोला होगा ना, तो क्यों क्या पढ़ा? अगर वो किताब ऐसे लिखा, किताब का पैकेट बनाओ, नोट्स कोई तो लिखा होगा ना, उसका पैकेट बनाओ, उसमें मुरमुरा डालो, खा लो. उसका काम वही नहीं, जो ऐसे लिखेगा उसका कुछ तो यूज करना चाहिए. एक तो डाउरी वाला सिस्टम थे, और एक जैसे किसने बोले इसमें डाउरी नहीं होता? बहुत डाउरी लेता है. देखो पहला रीजन जो है कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप, जेनरेशन ऑफ द जेनरेशन. देखो इस जनरेशन में रिश्तेदारी है, नेक्स्ट जनरेशन में रिश्तेदारी है. क्यों चाहते हैं? वाई दे वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप generation after generation. See, if both families are proven to be highly cooperative to each other, they help in times of need, like social need, economic need, then political need. So they would like to continue the relationship from generation after generation. क्यों? क्योंकि cooperation cannot be secured from outsiders, because with outsiders there is no obligation. आप अगर हेल्प करते हो ठीक है, नहीं करेगा रिलेशनशिप ओवर, फ्रेंडशिप खत्म. बट इफ देयर इज रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि यू कैनॉट सीवियर द रिलेशनशिप इजीली. तो क्या है, रिलेटिव्स विल कोऑपरेट. अगर कोऑपरेट नहीं करता तो क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, लेकिन दैट डजंट वर्क प्रॉपर्ली.
तो इसीलिए लोग हेल्प करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अब देखो, छोड़ भी नहीं सकते और काम भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? लोग हेल्प करेंगे। So that's why if families are proven to be useful to each other, they would like to maintain the relationship from generation after generation, because we need cooperation from others. If there is relationship, it is almost secured. If there is no relationship like friendship, there is no security. फ्रेंड्स करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा भागो। क्या रिश्तेदार को बोल सकता है? तो आप भगा भी नहीं सकते हो, तो रिलेशन काम भी नहीं कर रहा, तो क्या करता है? लोग हेल्प करता है। तो अगर अच्छा रिलेटिव मिल जाए तो उनके साथ जनरेशन पर जैसे क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा मिलना बहुत मुश्किल का काम है, समझा? आज की डेट में, आज की डेट कभी भी फेक रिलेशनशिप की कमी थोड़ी ना होता। जब जरूरत होता है सब भाग जाता। दोस्त लोग ऐसे होता ना। आप अगर कुछ अच्छा करो तो आपका दोस्त की कोई कमी नहीं है। जब भी जिंदगी में परेशानी है, दोस्त पहले भागेगा, कुत्ते की तरह। अगर किसी गांव में आग लगता है, कभी सुना कुत्ते ने जला? भाग जाता कहीं ना कहीं से। दोस्त भी ऐसा ही है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी, कहाँ भाग जाएगा? ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन रिश्तेदार कहां तक भागेगा? आना ही पड़ेगा ना। तो अगर रिश्तेदार अच्छा है तो उसके साथ रिश्ता रखना ही चाहेगा। तभी होता है। अगर मान लो कोई खराब है, किसी जैसा तो चल नहीं रहा है, उसके साथ दोबारा कौन रखेगा? तो इनके सब प्रूवन यूजफुल रिलेशनशिप में होता है। ऐसा नहीं हर घर घर में होगा। क्या बोलते हैं? सब लोग नहीं करता। क्यों? कर्नाटक में तो भूत होता है। नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप होने से नहीं होगा। दैट शुड बी यूजफुल टू बोथ द फैमिली। ठीक है। एक सेकंड जो है, इन दिस मैरिज डाइवोर्स रेट इज लोअर। क्योंकि देखो, both the grooms and brides family know each other for a long time. Grooms and brides also know each other from childhood days. So in case if there is any wrong adjustment after marriage, it can be easily sorted out. क्योंकि फैमिली एक दूसरे को जानता है, ग्रूम ब्राइड एक दूसरे को जानता है, तो क्या है, एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम काफी कम है। एंड ऑल डाइवोर्सेस इन एनी मैरिज आर रूटेड टू रॉन्ग एडजस्टमेंट। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं कर पाएगा तो फैमिली कर देगा। फैमिली तो बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करता है, तो डाइवोर्स रेट कम है। तो कौन चाहेगा डाइवोर्स आराम से हो जाएगी? क्योंकि पोस्ट डाइवोर्स लाइफ इज वेरी टफ। हर देश में, इंडिया में नहीं, यूएसए में भी टफ ही है। पोस्ट डाइवोर्स रिहेबिलिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सो नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड वेलकम्स डाइवोर्स। तो यूएसए में लोग बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जल्दी सेटल भी हो जाता है। उनको सब कुछ खुद को फेस करना पड़ता है। तो एक कारण है। थर्ड कारण जो है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर सोसाइटीज, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली ट्राइबल सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल गोंड। तो पहला कारण क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक लोअर डाइवोर्स रेट।
थर्ड क्या है? रिटर्न ऑफ ब्राइड वेल्थ। और दूध लौटवाना। तो दैट इज एप्लीकेबल टू गोंड ट्राइब। जो प्रॉपर्टी रिमेन इन वन फैमिली, ये आपको किसने कहा है? हम्म? ये फैमिली अपने प्रॉपर्टी सब दे देगी इसको? तो फालतू कहाँ कहाँ से सुन के आ जाता है, लॉजिक है ही नहीं। देखो, ब्राइड वेल्थ क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ मैरिज पेमेंट which is paid in kind mainly by groom's family to bride's family, and it is mainly practiced in tribal societies. So groom family pay in kind to bride's family at the time of marriage. That is called bride wealth. समझा क्या है? नहीं समझा लगता है। तो इसमें क्या है, एक जनरेशन में देता है, दूसरी जनरेशन में लौट के आता है, इसी उम्मीद पे शादी करता है। जैसे कि एक फैमिली है, ठीक है। देखो, when this man got married, he paid, ये एक फैमिली है, दो फैमिली है। When this man got married, he paid bridal to this family. When he got married, तो इस जनरेशन में दिया था दिस फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन लौट के आ गई। बिकॉज ऑफ दिस दे प्रैक्टिस क्रॉस कजन मैरिज। नहीं समझी? एंड दिस इज इन गोंड सोसाइटी। ये हिंदुइज्म में इस कारण के चलते, हिंदू में इस कारण के चलते होता। ये होगा कजन में, क्रॉस कजन मैरिज। नाउ पैरेलल कजन मैरिज। डायग्राम जरूर बनाना है।
Marrying father's brother's daughter, marrying mother's sister's daughter. एग्जाम्पल जो है मुस्लिम सोसाइटी और पेस्टल कम्युनिटी. मटन लिख दिया तो उसको सही कर लो. ठंड शुरू हो गया. क्या करें? टेम्परेचर 20-22 18 वैसे होगा. अभी तो शाम हुआ नहीं, हो गया है. अगर एक बार बारिश हो गया ना तो दिन में 7 डिग्री चलेगा. बारिश होता है दिल्ली में. अरे होता है सर्दी में बारिश. हाँ होता है ना. होगा भी, देखना. 1-2 संडे को दिखा रहा है. इस संडे चांसेस है. जानता नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2-3 बार तो हो गई फरवरी तक. अभी तो फॉग थोड़ा बहुत हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा. तो मैं जब सवेरे आता हूँ तो 7 डिग्री 6 डिग्री होता है. कहाँ से आता है इधर? बात करने के लिए. आज तो मन के अंदर तो ये हो रहा है, तो क्या बोलेगा, घुटन सी महसूस हो रही है. फुस फस कर नहीं पा रहा है. लगता है वो वेदी का इसी की जल्दी नहीं आती.
ये कान मेरा खराब कर, दोनों एक साथ बैठ के वो करते नहीं, यही करते रहते। पता नहीं, मैं तो पीछे से सुनता हूँ ना। अब तुम इधर वो कितना समझदार है, तुम बंद कर दिया। शांति से कुछ सुन लो। एक बात है, देखो, तो मैं गुस्से से बोला था, मैं आराम से बोल रहा हूँ, गलती की नहीं। अगर क्लास में जो मैं बोलता हूँ ना उसको सुन रहा है तो ठीक है, सुनने के साथ साथ इंटरनलाइज भी करेगा ना तो फायदा होगा। देखो, घर में जाके कम टाइम लगेगा, तो तुम जब खुद से अंदर एक दूसरे से बात भी करो, क्लास भी सुन रहे हो, कंसंट्रेशन तो डिवाइड हो रहा है ना, तो तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा घर में जाएगा। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, देखना घर में कम टाइम लगेगा। अच्छा किया। ये दोनों क्या किया था, आपको डिस्टर्ब कर नहीं वो तो आता ही नहीं है। तो क्या डिस्टर्ब करेगा मुझे। अच्छा, ये जो मैरिज फॉर्म है ना, बहुत रेयर है। ओनली फ्यू कम्युनिटीज प्रैक्टिस दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इन द वर्ल्ड। क्यों? इन दिस मैरिज रूल्स ऑफ इंसेस्ट टैबू इज अप्लाइड। क्योंकि देखो, फादर्स ब्रदर्स डॉटर, दे बिलोंग टू द सेम lineage, सेम फैमिली, lineage के सेम एक्सटेंडेड फैमिली, तो रूल्स ऑफ इंसेस्ट विल बी एप्लीकेबल। दैट्स व्हाई if cousin marriage is practiced, it is preferably cross cousin marriage. Only few communities, for example Muslim communities, then all pastoral communities will practice this form of marriage. क्यों? देखो, Muslim religion was originated in Middle East. It is a historical fact. And when it was originated in the Middle East, it was characterized by desert climate. आज भी desert ही है. So in desert you cannot go for cultivation. The main livelihood in the desert is pastoralism. कभी कभी cultivation होती है along the bank of oasis, कभी थोड़ा बहुत ही होता है. तो main livelihood in all the desert, hot desert in the world, is pastoralism only. In pastoralism, there is imminent threat of cattle raid. Groups raid each others for cattle. और वहां की सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? Land is not the property, because they live in a piece of land for the time being only. Once land for grazing is exhausted, वो दूसरी पेस्चर में चला जाता है. तो मेन रिसोर्स क्या है? आपका कैटल्स होगा. So now imagine a situation, there are two groups, group A, group B. Suppose some members of group A are married to group B. लेकिन members of group B in general are very crook, गंदे सोच रखते हैं. One day they raided this group for stealing cattle. Pastoral में रेडी होता है कैटल चुराने के लिए. Now those are married to some members of group B. They can divide their loyalty. भाई रिश्तेदार लोग आ गया है, तो क्या होगा? They cannot be remain united. अगर वो यूनाइटेडली फाइट ना करे तो इनका तो सारे लेके भाग जाएगा. So to avoid division of loyalty, they had developed parallel cousin marriage. Marry within your own group. Don't marry outside. So if you are facing any threat of cattle raid, you can fight unitedly. You can protect your property. If once cattle are raided,
you are perished because it is the only source of wealth. So that is why all pastoralists across the world, they practice parallel cousin marriage. So Muslim originally was a pastoral group. That's why they developed this form of. तो आज की डेट में देखो ये सब सिचुएशन है ही नहीं, तो प्रैक्टिस ऑफ पैरेलल कजिन मैरिज हैज बीन रिड्यूस्ड. लेकिन आजकल किस ग्राउंड पे करता है? अगर ताऊ चाचा प्रॉपर्टी वाले होता है ना तो शादी कर लेता है, क्योंकि पेस्टम तो रहा नहीं. दिल्ली में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए पेस्टम क्या? तो एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन वो शादी करते, लेकिन तभी अगर चाचा ताऊ अमीर है, गरीब है तो नहीं करेगा. यही कारण है. अब लेबी सरो रेट चलो आज रखते 5 ठीक. कल पूरा खत्म तो नहीं होगा लेकिन काफी हद तक हो जाएगा. तो मैंने देखो मीनिंग बताया, एग्जाम्पल बताया, कारण हर चीज में बताया. एग्जाम में कारण नहीं देगा ना तो उम्मीद मत करना अच्छे मार्क्स आएगा. तो कारण नहीं देगा तो सोचेगा ऐसे ही कर लेते शादी. तो मैरिज इज ए कल्चरल प्रैक्टिस which is an universal institution. So don't think it is a choice to practice a particular form of marriage. It is a compulsion. अगर वो फॉर्म नहीं डेवलप करता था तो वो खत्म हो जाता था, उनके काफी नुकसान हो जाता था. तो इसीलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डोंट एक्सप्लेन, जस्ट गिव रीजन. थैंक यू. अभी तो खत्म ही हुआ. आज अगर लोग नहीं आएगा ना, सबको एक एक करके फोन करेंगे, सबसे बोलने में क्यों नहीं आएगा, आना है कि नहीं आना, फिर मार्च कर देंगे. और क्या, तब बैठे बैठे रह के 2 आदमी आता है. हाँ ये तो सब इस वाले बैच का ना, यही लोग तो उस वाले बैच कहाँ रहते हैं, 2 ही लोग आते हैं. और ऑनलाइन में सब लोग सीक्रेटली करते हैं क्लास. वो तो देखो नहीं, सीक्रेटली सब एकलव्य है.